सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, कैम छो गाइस, की हाल चाल, व्हाट्सअप एवरीवन। आज का जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ, I'm gonna show you my house around which is in Kotgarh. It's not that a big house but yes, it's like a गांव वाला हाउस। गांव का जो मतलब पहाड़ों में जो घर होता है वो भी एक हाउस है। You can see my Pluto here. Hi Pluto! Look at the valley around, look at the cherry trees, plum नहीं है, this is apricot, deodar, kayl के पेड़ and fantastic बान भी है। बान को क्या बोलते हैं? बान को बोलते हैं I think. And look at the mountains covered with the snow again. ये here we go, here we go, here we go, here we go. Okay, so as I said, this house is under construction. जो अभी भी बन रहा है, you can see कि outside paneling करने को रहा हुआ है, and this is the huge. So basically इस घर में we have 8 rooms, 3 bathrooms and 2 living rooms and 1 kitchen, and with 2 floors. So as I said, ये घर construction में है, तो so let's me take you to the upper floor. So this is the upper floor and we are going in. Open the gate. So guys, this is basically a small patio है जहाँ पे हमारी लेबर वगैरह खाना खाती है और हम धूप रस देखते हैं। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना ही प्यारा व्यू यहाँ से दिख रहा है। पूरा जंगल सराउंडेड बाय देवदार एंड कायल के पेड़ से, and obviously farm also. So let's go in now. Okay, this is my main door. This is my main door, and let's go in, guys. Okay, so this is we have a washroom here. Obviously I don't want to show you the washroom, but yes, it's okay. कई गांव में वॉशरूम कैसे होते हैं? गांव में वॉशरूम ऐसे होते हैं, like little messy. पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, तो we have to keep the drums and all everything in the bathroom. Fair enough, it's okay. And let's go here now. This is a living room which is next to the kitchen. So basically ये एक you can say modern and contemporary kitchen with living room. Okay, so let me show you the kitchen first. When I say contemporary, though, it means we have like a sitting वाला area, क्योंकि गांव में चाहिए होता है, लोग people prefer to sit आराम से चौकड़ी मार के बैठना पसंद करते हैं. And this is my kitchen here. Nothing special. जो kitchen हर किसी के घर में होता है वैसे ही मेरे घर में भी kitchen है. ठीक है जी. And this is we have a living cum dining room. Okay, and let's go here. Here. Heater is very much required. So आपको यहाँ पे हर कमरे में एक हीटर मिलेगा, हर लिविंग रूम में एक हीटर मिलेगा, and which is very much required क्योंकि this is my छोटा सा कमरा, which is again like a little messy. Sorry guys, but yes. See, as I said, हर रूम में एक हीटर मिलेगा. यहाँ पे भी हीटर है, देखिए, क्योंकि ठंड बहुत है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड है सर्दी में तो. And nothing special, but yes, this I have like a cute chota sa room, and the best thing of my room is the view. Look at the view, guys. Can you see can you see that snow? That's basically the Himalayas covered with the snow and all, and the valleys around. That's the best thing. Here again I have a small living room, TKG, which is I don't know what to say, but yes, which is next to all the 3 rooms. That's my mom's room, which I want to go inside. It's like a little privacy. It's okay, fair enough. And that's again the guest room over here, and that's again the guest room over here. And so let me show you something, guys, something here. इसको थोड़ा है ना, ये थोड़ा अभी हम इसको सर्दी में यूज़ करते हैं, तो इसका ये पेंट वगैरह निकल गया है. Otherwise it looks so good. So what is this, guys? Any guess? Okay, no issues. This is basically पापा ने बनाया है एक रूम के लिए चूल्हा नहीं कहेंगे इसको कहेंगे अंगेठी. It's a big अंगेठी. This is basically mom and dad's room.
एंड इसमें क्या है, इसमें लकड़ियाँ बाहर से पड़ती है, घर के बाहर से। सो एंड इसमें लकड़ी नहीं पड़ती बेसिकली, इसमें ना एक पूरा लॉग पड़ता है। हम उसको पहाड़ियों में कहते हैं गिल्ठू। तो पूरा गिल्ठू इसमें डाल दो अंदर, और पूरे रात भर यू फील लाइक यू नो राजस्थान। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज समथिंग ऑसम डैड हैज़ मेड, एंड प्रॉब्ली आपको और कहीं दिखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज अभी थोड़ा रूम में अंधेरा है तो वीडियो भी थोड़ी अच्छी नहीं आएगी। बट यस, दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ ऑल मेड अप ऑफ लोहे से, एंड लोहे की चादर से, लकड़ी बाहर से, और पूरा पूरा हीट, फुल हीट आती है। एंड आपको यहाँ पे जब सर्दी हो, कुछ भी हो, बार बार पड़ रही हो, एंड यू फील लाइक इन लाइक 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, अनदर बाथरूम वी हैव ओवर हियर under the stairs, and simple है, कुछ nothing special. That's what we have. Here we go. So this is again दीवान, जो हम यहाँ पहाड़ी में दीवान कहते हैं, क्योंकि उस पर बैठ के धूप से जा सकती है। एक्स्ट्रा गेस्ट होते तो वहाँ पे सो सकते हैं, तो हमें बिल्कुल किसी बात की कोई शर्म नहीं है। ओके, दिस इज़ सपोज टू अ बाथरूम, बट वी मेड दिस अ पेंट्री, बिकॉज गांव में पेंट्री होना ज़रूरी है, जिसमें बहुत सारे कपड़े, बहुत सारी रज़ाइयाँ, बहुत सारे गद्दे, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारा अटम पटम रखा जा सकता है। एंड यहाँ से वी गो आउट टू another balcony, and which I'll show you. Here we go guys, कि आपको यहाँ से सारे बगीचा वगैरह ब्ला 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 बहुत कुछ दिखेगा, पहाड़ियाँ दिखती हैं, which I believe this is awesome. This is heaven on earth. Look at the guys, look at the view guys. आप यहाँ बैठिए, सुबह सुबह चाय पीजिए, wow, the fresh air and the tea, amazing. What else you want? We're in the heaven. ये था मेरा घर का टूर. I hope you enjoyed it, and if you have any question or something about the house, so please let me know. Please ask me. I don't mind that. And nothing special, guys. So please do like, to subscribe to my channel, and like my videos, share my videos as well, and press the ghanti so you will get the notification of our videos. And stay blessed. God bless you all.